कर सकती, as I have correctly understood your point? Lordship, let me first address, I will come to your Lordship's question. Lordship, I have not used a single word that there was any, or nor I have imparted any insinuation on any one parliament or anything else. Your Lordship's point that what has happened in the past, in fact, our past is unfolded for us for a better future. So your Lordships are sitting as 15-member bench. Your Lordships can undo whatever the cases have been passed. What your Lordship is perhaps Excuse me, sorry, we cannot. The appeal gives us the right to do it. आप कह रहे हैं we can, अभी तो आप contradiction कर No, रहे my हैं. lord, no. आपने का पिछले judgments की बात है. मैं जो आपको submit कर रहा हूँ, वो एक मैं सिर्फ सर, जी सर. The first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, Doso versus State was set aside on as being not good law, as having made Pakistan a perfectly good country into a laughing stock. Now the question is, when the court did that in Asma Jilani, was the court hearing an appeal against Doso versus State? Lordship, I didn't get your question. Maybe if you put your speaker on. Speaker is on. My question to you is that the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Jilani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. No, no. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of an appeal in order to be able to do so. The court should have the stature, if it wants to, if it thinks an error has been made, it can correct that error. There are many ways, because we are a common law jurisdiction. We are driven by common law, by precedent. Doso versus State, Grand Norm, Tellson's theory, that was all precedent. Asma Jilani, totally different case, said wrong, that was wrong law. In the future, the court can do that. But I think if I may, if you permit, I would like to ask you a question on 184.3, because you read it out to us. Now you read out the word, the court shall if it considers. My question to you is, this consideration, is that judicial power or is that administrative power? No, that's a judicial power. That's what my argument is. Therefore, it seems to me, because you see, it's very interesting that one of our learned colleagues in a number of, well, not number, but in few, more than one chamber appeals, he has made an order that the question of maintainability of a petition under Article 184.3 is adjudication. It is exercise of judicial power, and therefore the registrar can't do it. As I read section 3, it seems to me that that is what section 3 is conferring a power on the committee. Now, I read the decision of my learned and distinguished colleague to be a statement of principle. And if this principle is correct, surely it seems to me, but you can correct me if you think that I'm wrong. If this principle is correct, then issue of maintainability, whether decided by the registrar of this court or whether decided under cover of this act by a panel of judges, no matter how senior and eminent those judges, it is still exercise of administrative power. It is not adjudication, which maintainability requires because of the word considers. So would it be therefore correct to suggest that the use of this word considers, which necessarily means exercise of judicial power by the court, section 3 is in direct conflict with this requirement of Article 184.3, and therefore perhaps on that very short ground is perhaps unconstitutional. Absolutely. And there are scores of judgments. As I said, I'm not going by the judgment that the constitutionality has to be decided by the court itself. That's the function of the court. If I may take this a little bit Learned further, Counsel. if I may take,
I'm sorry. No, answer the question. Please, my lord. Learned counsel, so on the same argument, the power that earlier vested in the Chief Justice to consider and pick and choose whatever petitions he wanted to place before the court, that was also unconstitutional? Lordship, if I am too small a fry to raise this argument, but I think I have to raise this argument that your lordships are proceeding on a premise that this bench or the committee of 3 judges would be able not to pick and choose. And it is, if past experiences are any learning curve for us, it will not be difficult for us to imagine even a committee where the 3 judges are on the same page, as they call it, and then still just decide to fix the benches, then that would be going on a mafruza, if your lordship would say. आप मफरूजों की बात कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम तीनों मिल करके आपके खिलाफ फैसला कर रहे हैं जी इरफान साहब के केसेस लगाने ही नहीं है, ठीक है, सुन लीजिए। आप कह सकते हैं 5 की कमेटी बनाए, वो भी बना सके, कर सकता है, पूरा फुल कोर्ट करें, वो भी कर सकता है, मगर ये जो कानून है इसकी सिमत सही है या नहीं, आप मद्देनजर रखिए जो हो चुका है पाकिस्तान में। अगर आप कहें नहीं, मैं तो एक मफरूज़े पे बात करूंगा, पाकिस्तान की तारीख को नज़रअंदाज करना चाहता हूँ, तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह तो अगर आप कहें तो, मगर वो अंग्रेजी में कहावत है सेफ्टी इन नंबर्स, ठीक है, हो सकता है हमें बड़ा इख्तिलाफ हो जाए, ठीक है, हो सकता है हम, आपने जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सेम पेज पे हों, मगर ये बेहतर है या वो बेहतर है। तो मफरूज़ों पे ना चलिए, आप सिर्फ बताइए। एजाज साहब बार बार आपसे 2 बुनियादी सवाल उनके वहीं के वहीं रह गए, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, उन सवालों पे अगर आप फोकस करें तो जरा आपके लिए आसानी होगी। आप उन्हें लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मेरा बार-बार वही जवाब है, it has to follow the law and the constitution. Mr. Hassan, I'm right here. Sir. Just following that, Justice Ijaz had already quite, succinctly pointed out the question, and we're going all over the place. Let's just get done with the competence. To me, competence revolves around Article 191, entry 55 and 58. So direct question to you is there a parliamentary competence under 191 itself? Because competence can come through 2 ways. One is through the Constitution itself, or the other is through the entries in the Constitution. So the direct question is, under Article 191, can the Parliament legislate regarding practice and procedure? We'll come to the appeal later and see whether at all it's part of practice and procedure or it's a substantive separate provision. Usko chhod dein. Abhi sawal aapse पूछ रहे हैं कि क्या 191 directly or read with 58 gives Parliament the power to legislate regarding practice and procedure? No, my lord. What's your answer to that? My short, clear and crisp answer is no. No, please tell us how. How? Because if your lordship would read 142 read with 191, Right. so because there is a direct power to the Supreme Court to make rules. There is then- also a power and to it- the Parliament to make law to under law 191 relating to what? to the practice and procedure. It doesn't say so. That's true. Where is that? It is, so practice and procedure is not आप जरा enlargement पढ़ of the लें, power. 191 को एक दफा पढ़ लें। जी my lord. Let's read 191. फिर बताएं कि क्या वो पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है। Rules of procedure. Subject to this constitution and the law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. So the question is that it says that the practice and procedure could be regulated by the Constitution itself, by the law given by the Parliament, or by the rules made by the Supreme Court. There are 3 different sources Yes. which could regulate the procedure. And nothing is redundant in the Constitution, so there could be a parliamentary act passed by the Parliament which could regulate the practice and procedure. And any rules would be subject to the Constitution as well as to that law. So the law 191 itself is authorizing the Parliament to go ahead and come up with legislation on practice and procedure. And if not, if we were to read it 58, then again Parliament gets the competence to legislate regarding practice and procedure. That's a separate question. What is practice and procedure? It's a separate question whether at all that legislation then does not pass the constitutional muster as far as fundamental rights are concerned. We'll come to that later.
आपसे सिर्फ सवाल ये है कि 191 रेड विद 58 कैसे नहीं पावर देता पार्लियामेंट को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे कानून साजी करें? सर मैं इसका जवाब आपको देता हूँ. अगेन देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन. मिस्टर हसन यहीं पे इसको सप्लीमेंट कर Sir. लीजिए क्वेश्चन को, whether the word law used in Article 191 can be construed in a sense conferring a power on the Parliament to legislate on the practice and procedure of the Supreme Court, or it should be construed in a sense limiting the power of the Supreme Court to frame rules. Sir, ये आपने एक जजमेंट में the Supreme Court has interpreted what does subject to the Constitution and the law mean. In the context of 191, the power, आप इसको पढ़ें, the Supreme Court may make rules. The power lies with the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट. और जो सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कोई रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट के कोई रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्टिंग लॉ में ना हो तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाएगा. If there is a restriction in the constitution or if there is a restriction in an existing law, उसके contrary Supreme Court rules नहीं बनाएगा. लेकिन rules कौन बनाएगा? Supreme Court. Supreme Court बनाएगा. और इन restriction existing law और existing law they're defined है 267. सर इसमें अगर हम existing law में अगर restriction नहीं है, Constitution में restriction नहीं है, then the exclusive power to make administrative rules or internal rules or rules of procedure, exclusive power is with the Supreme Court. Sir, this It is does not confer jurisdictional or it does not confer competence on the Parliament to 191 does not confer power on the Parliament to legislate on practice and procedure. I'm grateful for raising this question. In fact, I have made a list. चले चले बढ़िए बढ़िए आगे. Malot, if I may submit. नहीं सबमिट करें, घड़ी को भी देखिए. जी. अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बिट्स एंड पीसेस में इंटरप्रेट करना है, then we may not be able to reach any conclusion. If we have to read as a whole, मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ये जजमेंट आपने वो देखी है जिसमें ये इंटरप्रेट हुआ है. जी मैंने ये आपको रिप्रोड्यूस की है. अच्छा पहली बात एक चीज मुझे बता दें, आप क्या अग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो कर सकती है? सर मैं एग्री करता हूं इस चीज से कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो कर सकती है. अच्छा रुक जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, मैं नहीं अग्री करता हूं. ठीक है. और हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. जिस किस्म के प्रेसिडेंट्स विलायत में बनते हैं, कॉमन लॉ जिसको हम कहते हैं, हमारे उसमें आइन में इंदराज हो गया है. जैसे लफ्ज आ गया ना, डिफेंड, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब ये अदालत, और मैं खुद एतराफ़ करता हूँ, और जब तक आप एतराफ़ नहीं करें सलाह हो ही नहीं सकती है. वो आया, कोई शख्स आया, जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आइन को आप रोंद लें, आप आइन को बदल लें. तो ये अगर हम इस पे चलें तो फिर इसका मतलब है हर बेंच जब उस वक्त में फैसला करेगी वही लागू होगा. आइन का तो कोई अहमियत रही नहीं. फिर तो जजमेंट लॉ पे हम चलेंगे. आइन को एक तरफ रख दें, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का मूड ये है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फैसला सही है और 4 जजेस जो सिंध हाई कोर्ट का उनका गलत है. फिर मूड हुआ कि जी डोसो केस में वैलिडेशन और मार्शल लॉ तो सही है. फिर जिलानी केस में नहीं आज सही नहीं है, नहीं फिर सही हो गया और फिर नहीं सही हो गया. मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बुनियादी सवाल तो ये उठता है, आप क्यों नहीं आप हिम्मत पकड़ते हो कहें सुप्रीम कोर्ट गलत थी, क्योंकि आइन के बरक्स या कहिए, हिम्मत कीजिए और कहिए नहीं बिल्कुल, या आप कहिए हम जंगल के बादशाह अंडा दें या बच्चा दें. क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आप आखिरी बात कर रहे हैं. ना आप पहली किश्ती में जाना चाहते हैं, ना दूसरी किश्ती में जाना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि मैं ये आखिरी बात कर दूं जो मुझे जेब नहीं देती, क्योंकि मैंने ऐसा हल्फ उठाया नहीं है. सर आपने हल्फ उठाया है
प्रिजर्व का इंग्लिश का कॉमन मतलब क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप वर्ड्स पे जाते हैं और आप स्टारे डिसाइसिस में नहीं आपसे जाते, पूछ रहा हूं, तो आप ही राय फिर दीजिए ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक लफ्ज इधर उधर नहीं कर सकते। Leonard प्रिजर्व मीन्स यू हैव टू प्रिजर्व इट, Leonard ठीक है, Council, डिफेंड इट, यू हैव टू डिफेंड अगेंस्ट एन अटैक। और कितना वक्त आप ले रहे हैं अभी, आप बताएं। सर अब मैं क्वेश्चन Leonard Council coming back, अभी मेरे मेन जी Leonard Council coming back सर, to, अगर आप माइंड वो बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे, Leonard Council coming back to my Lord Justice Ijazul Hasan's question. ये जो interpretation है 191 की, how do we read into this provision that subject to law means a restriction in the law and that the primacy is to be given to the rules made by the Supreme Court? ये जरा explain कर दीजिएगा ना। सर, जो 191 की पास हैं, दे आर डायरेक्टली कमिंग, जो मंसूर शाह साहब ने भी क्वेश्चन किया था, दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। द क्वेश्चन ऑल्सो अराइज, कैन द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल मेकिंग पावर कैन बी stultified by a sub constitutional legislation? They cannot be, because whatever has to be done, it has to be done through an internal ये mechanism. तो आप दोहरा रहे हैं अपनी बात, कोई नई दलाइल दीजिए ना। मैं अगली बात के हसन ऊपर, साहब, please. सर एक मैं सिर्फ बात कर लूं, तो जवाब जो था वो, अगर आप आप कॉन्स्टिट्यूशन जरा इसी कंटिन्यूएशन में सवाल देखें ना, आप ये 191 की बात कर रहे हैं, वो तो जो उसकी ओपनिंग वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो मैं समझा एज फार एज आई एम कंसर्न, इसमें तो शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, लेकिन दैट मस्ट बी सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। उन इख्तियार के तहत, उस लॉ के तहत जो भी रूल्स बनेंगे, हम उस रूल से, उस लॉ से हट के बाहर नहीं जा सकते। क्या इसका ये मतलब नहीं? यही क्वेश्चंस तो आप लोगों ने रिजॉल्व करने हैं। इफ द मेजॉरिटी विल नहीं तो फिर करने, तो फिर आप बैठ जाइए, हम कर लेंगे। मैं फिर आपकी जरूरत नहीं है, आप तशरीफ रखिए फिर। आप मेरी बात तो सुने। द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 191 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। 191 में सिर्फ नहीं, मगर आप बात ही नहीं समझे। अगर आप उसकी ओपनिंग वर्ड देख लें, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, माय लॉ, जरा सुन लीजिए ना। जैसे जमाल साहब ये कह रहे हैं, तो ये एंड लॉ लिखने की जरूरत क्या पेश आई? सिर्फ लिखते सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये लॉ जो दो लफ्ज हैं, इसको हम कैसे इसकी तशरीह करें, ये सवाल है। सर, इसमें एक जवाब तो ये है कि जिस वक्त ये रूल्स बने थे, अगर कोई लॉ मौजूद हम होता, आइन की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी, मैं आइन, सर जिस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए थे, उस वक्त अगर कोई लॉ मौजूद होता तो उसके आप फॉलो करते, विच आपका कहना ये कि जब आइन बन रहा था उनको ये पता ही नहीं था। सर, द क्वेश्चन इज दिस, जिस वक्त आइन बन रहा था, आप ये बताएं कि सब्जेक्ट टू का क्या मतलब है? इज दैट एन इनेबलिंग पावर? डज इट गिव कॉम्पिटेंस और इज दैट अ लिमिटेशन? Does that restrict the power? Because the understanding, one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being driven from. Whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to, is a limitation. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law. So all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. If we go by the words which are used in the constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. So what does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where the particular... देखिए हसन साहब, आप जवाब देते नहीं हैं, आप दूसरी जगह चले जाते हैं। सर, मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर लूं ताकि आपको सब्जेक्ट टू का मीनिंग बता देना जी। हाउ शुड वी रीड इट? सवाल एक हुआ ना, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो रूल्स उसको फॉलो करें। यही पूछ रहे हैं, या नहीं? जवाब भी देते कोई भी नहीं है। हसन साहब, ये रिस्ट्रिक्शन की क्या बात है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें। सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, रिस्ट्रिक्शन का कोई इशू ही नहीं है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है। अब ये लॉ आ गया
इसमें भी अगर हम कुछ चाहें तो हम रूल बना सकते हैं, क्योंकि ये लॉ के अंदर कोई चीजें आई हैं, मिसाल के तौर पे उसको रेगुलेट करने के लिए रूल बनाने की जरूरत है। सुन लीजिए, कोई भी सेक्शन ऐसा है उसके लिए भी हम रूल बनाना चाहें तो विद इन दी प्रेमिस ऑफ दैट लॉ सुप्रीम कोर्ट में रिवाइज द रूल्स बिकॉज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बात समझ आई आपकी? सर अब क्वेश्चन एक अराइज ये होता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन और इनलार्जमेंट का इशू नहीं है, ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू हर जगह इस्तेमाल होता है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, notwithstanding anything contained in the constitution, non-obstanding clause। तो ये जो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब? So sorry, आपके सुप्रीम कोर्ट कहाँ से बना है? नहीं, that is right. Supreme Court is the creation. Supreme Court has been created by the Constitution. That's correct. Supreme Court, Constitution and law, जो भी लॉ होगा चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो, लॉ में मौजूद हो, हम उसके मुताबिक रूल बना सकते हैं। बिल्कुल चलेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो इस लॉ के बाद भी हम रूल अपने अमेंड कर सकते हैं। सर क्वेश्चन ये है, कोई क्वेश्चन ऐसा है आप बना सकते हैं, बट क्या राइट ऑफ अपील है, राइट ऑफ अपील है, उसके लिए हम अपने रूल में कर सकते हैं कि इस अपील को हम किस तरह हैंडल करेंगे। राइट ऑफ रिव्यू है, हम चाहें तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका कोई इतना नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सब्जेक्ट लिख दिया तो बस हाथ पैर कट गए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया पूरा। देखिए, दैट इज फॉर योर लॉर्डशिप्स टू डिसाइड। व्हाट माय सबमिशन इज phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means what if there is a restriction in the constitution, Absolutely. you cannot go beyond that. It's not beyond that. Subject to law means It's correct. unless restricted by law. But कौन सा law which exists for the reason कि subsequent legislation के लिए relating to the Supreme Court there has to be a specific authorization in terms of 55 item 55 जो specific authorization नहीं है सारी constitution में। That is the precise question your lordship। नहीं मिस्टर हसन, आप हर चीज पे प्रिसाइज क्वेश्चन वो कह रहे हैं, अपना तो आपका जवाब ही कोई नहीं। जवाब तो whoever says whatever to you, you agree with that। अच्छा नहीं, आप देखें, सवाल आपसे ये है जी, I'm just adding to what Justice Ijaz just said। 191 की बड़ी important interpretation का सवाल है हमारे सामने। एक ये सवाल इस तरह भी पढ़ा जा सकता है 191 को, and that's what we want you to assist us with, you see, whether at all 191 envisages that there can be a law made by the parliament that regulates practice and procedure, and once that law is there, then the Supreme Court rules will be subject to that law. So the fact that it is mentioned there that there could be a law relating to practice and procedure makes it an enabling provision. Is that a correct interpretation or not is a question I'm asking you. Subject to law, constitution and law, is that an enabling provision because the constitution is saying that there could be a law relating to practice and procedure, meaning by that there is a substantive power given to the parliament to make law relating to practice. Is that a correct interpretation? And could we, if we have any problems, could we just tag along entry 58 with it to then make this complete? ये पहला सवाल आपसे पूछना, जवाब प्लीज दे दें कि आप ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लॉ के लिए लॉ बना सकते हैं, वरना उस लॉ का क्या मतलब है 50 आर्टिकल 191 में? रिडंडेंट हो गया वो लॉ का वर्ड। मैं जवाब दे दूं अगर आप इसका जवाब दीजिए, कब से मुंतजर हैं सर। अगर आप 191 को आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आपकी बात ठीक है कि लॉ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप 191 को 142 और एंट्री 55 से पढ़ेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो उसमें पावर नहीं है, तो उसमें पावर नहीं है। ओके चलिए, ठीक है, आपका जवाब आ गया। अगर जरा घड़ी देखिए और टाइम आपका कितना हो गया जरा। आई एम ग्रेटफुल फॉर, If I may ask you a question. मैंने तो अभी आर्ग्यू ही नहीं किया, क्वेश्चन ही आंसर कर रहा हूँ। इसी तरह होता है, डोंट वरी। आर्टिकल 191 में जो ये पावर, ये जो सब्जेक्ट टू लॉ है, कैन पार्लियामेंट मेक ए लॉ in exercise of Article 191
repealing the Supreme Court rules 1980. So that is what. Let's take it one step. यही तो सवाल है आपसे कि क्यों नहीं? अब अगर आप हर दफा yes कर सर देते हैं। उसमें इबाहम है ना, दैट इज, ये तो आपने इंटरप्रेट करना है। तो छोड़ दीजिए, फिर हम फिर नहीं है फिर ना। आप बैठ जाइए, फिर हम कर लेंगे। हम इंटरप्रेट। आपका क्या फायदा? शुक्रिया। सर मैंने तो आपको मेरा मेन पॉइंट है। चलिए फिर दूसरे हम उनसे पूछ I रहे have some questions for you. I have some questions for you. So stick around at this rostrum. Now you say that the law that Parliament can make under 191 cannot repeal the Supreme rules made, which are currently the Supreme Court rules 1980. Absolutely. Can there be an implied repeal? They cannot be, sir. Now, order, for example, to take one example, order 11 of our rules says benches shall be constituted by the Chief Justice. Now, section 2 of this law constitutes a committee of 3 to do the same job. It follows from this that there is an implied repeal of order 11. But your case is that since there can be no repeal, there can't be any implied repeal. So on that basis, potentially we have now a conflict between what section, assuming the legislative competence, section 2 and what the Supreme Court rules are saying. Now, how is that to be addressed? How is that to be addressed? If your submission is correct, there can be no repeal, therefore there can be no implied repeal, yet there is section 2 of the Act. In section 8, they have provided a overriding clause, which effectively is an implied repeal. But you say that can't happen. So if Parliament makes a law like this, and there is a conflict, and here is the conflict, I'm giving you one example of it, how will that be resolved? So that will be very difficult to resolve, because I would humbly submit that my answer to your question would be that the Parliament has got no power to do that. Because Parliament, sir, your function cannot be controlled by the Parliament. That's against the. Now, if I may, in light of this very interesting debate that has, or discussion that has been going on, what does subject to law mean? If I may draw your attention to the 1956 Constitution. In that Constitution, the third schedule provided the rule-making power of the Supreme Court. ठीक है? और आप उसका आर्टिकल 177 पढ़ेंगे. है आपके पास किताब? जी 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का रूल मेकिंग का. नहीं, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में रूल मेकिंग पावर थी सुप्रीम कोर्ट की. 56 कॉन्स्टिट्यूशन दें जी. अगर मैं इन द मीन टाइम मैं आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है? उसके that had to be read with Article 177. Now this is very interesting, and my question to you is whether the language as used in Article 177 and the language used in Article 191, is there any difference? 177 of the 56 Constitution said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the third schedule shall apply. Right. So it seems to me that here was a direct enabling ground. Third schedule said rule-making power is with the Supreme Court and the High Courts, but 177 said until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament. Here the language is not like that at all. And if we regard law as used in 191 to be an enabling power, then that sets up this conflict between, because the law cannot repeal the Supreme Court rules, there can't be an implied repeal. So maybe one possible way of avoiding this conflict is to read law as meaning that it is only it can only apply a break, or let's say it's not an enabling power. Because the framers of the Constitution did have Article 177 before them. They could have followed this language. They could have said,
until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, Supreme Court may make its rules. They didn't do that. If you are right, and as you say, it is for us to ultimately decide, if the law cannot repeal the Supreme Court rules, if the law cannot impliedly repeal the Supreme Court rules, then where does the conflict go? And maybe if to regard it as not an enabling power allows for the conflict to Because dissipate. the rules have the constitutional power. That is also a question, that whether the parliament can undo a thing which has been done exercising the constitutional power. The parliament cannot. That is the You answer. see, in Baz Muhammad Kakar, this court has Usme very yahi bilkul hai. specifically held that because these rules have been framed in exercise of constitutional powers, they cannot be displaced, amended, modified, overruled by ordinary legislation, because these rules stand at a higher pedestal. This is what I have actually reproduced Baz Muhammad Kakar's citations on that basis. Yes. Mr. Hassan, I believe it will be last अब आप question. कितना टाइम लेंगे आप बता दीजिए मैं पॉइंट्स को सिर्फ आपको कर रेफर लीजिए कर देता खत्म हूँ हाँ सर अमीनुद्दीन साहब The का क्वेश्चन question is whether we were able to frame rules in 1980 in derogation of the existing law at that time. My lord, my honest answer would be no, if the law would have existed. then Because the this rules- is an exercise which has been The done. rules So are perhaps subject- one way to look at it would be that if you were to look at your rules in future, but then you would have to see whether the law provides for anything which is within the constitutional No, framework or no, not. the That's a very question- important the- question the which we second are part is missing out. Because that here, in fact, one of the other aspects that this committee is doing, it is preventing an access to the Supreme Court directly and preventing the Supreme Court from making an order. This is the question. If the parliament legislates, which is as per your contention in contradiction with that rules, it is the basis for striking down of the legislature's legislation. Yes, if it is in conflict with the clear provisions, very simple provisions of the Constitution, it is a reason to strike it down. my lord. If I may follow up on that, you see, the 1980 rules replaced the rules of 1956, the Supreme Court rules 1956. The Supreme Court rules of 1956 were existing law within the meaning of Article 268 when the present Constitution came into force on the 14th of August 1973. That is when the power of, or the jurisdiction, whatever you want to call it, if such jurisdiction exists, of Parliament to make a law came into being under Article 191. So there was no vacuum, there was no break. As soon as that power came into existence, there were already the Supreme Court rules in the field, the ones of 1956. So therefore, there was a continuity perhaps. All that happened was that in 1980, those rules were changed. So if I may ask you my question in a slightly different form, could say in 1974, 1975, 1992, sorry, not 1990, say in 1973 or 1974, 1975, could Parliament have made a law under 191 repealing the Supreme Court rules of 1956? No. No, absolutely not. So the same, so the enabling aspect of it, the The problem fundamental point that I like your brevity Ji? I said I like your brevity Leonard you Council. say yes no Leonard Council. which we really appreciate Leonard Council. are we concluded because I want to hear you say something more Leonard if you Council. want to say something more. Leonard Council. Your Lordship would allow me, I have submitted, I am Leonard still Council. answering the question, my lord. Leonard What Council. can I do? I like your brevity. Leonard Council, this is a question for you and for all the councils. Can you cite any example from any jurisdiction around the globe that give precedence to rules made by an unelected court over a primary legislation made by a competent forum? Your Lordship, I would respectfully I think submit, this in is- fact, I wanted to make, Your Lordship may
rethink and rephrase this. Answer the question again. You're doing this. I would respectfully say. This is not Answer the this is question. not an unelected court because भाई this आप is a जवाब दे court देना कहीं दुनिया में which होता है which is created by the दुनिया में पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं तो वो साइट कर दीजिएगा एग्जाम्पल। जी मैं आपको करके उसका जवाब मैं दे दूंगा, बट जो क्वेश्चन है रूल्स जो है दे हैव टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। चलें फिर आप दे दीजिएगा जवाब दे दें। मतलब माय नेक्स्ट पॉइंट हसन साहब इसी क्वेश्चन में इसको बढ़ाते हुए क्या आपके कहने का मतलब जो मैं समझूं, आप कहते हैं कि ये रूल्स वंस फ्रेम्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड, और अगर ऐसी कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप बताएं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में डील कर रहे हैं, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बार लगाया कि पार्लियामेंट हैज नो अथॉरिटी टू मेक लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो देन ओके, इफ नॉट बता दें क्या ऐसा। let's put it another way. If there is no bar, there is no permission also, and this is what we are arguing since morning, that there is no permission for the parliament to make the law. हम वापस उस पे आ जाते हैं। If there is no specific bar, there is no permission at all. Your Lordship, this is the way to look at the constitution. हम वापस 199 में आते हैं। Opening words हैं, the rules must be subject to law and the constitution. Constitution and the law, but who will make rules ताबे हैं कानून के, और कानून 142 में बताया गया पार्लियामेंट का काम है to make law. मैंने शुरू में एक आर्गुमेंट देखिए आप जरा आप बात की देखें, वही बात बुनियादी बात वहीं ठहरती है। आप तो सुन रहे तो लेना वो जो एजाज साहब का सवाल था, देखिए अगर ये कानून में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि गैर आईनी हैं तो उनको तो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, मगर एजाज साहब का सवाल अपनी जगह है। वो आप सवाल वो तो आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि वो बना सकते हैं या रूल्स या नहीं, वो आप हाँ या ना जवाब दे देते हैं हमें, और चलिए फिर अगर यही जवाब है तो हम सुन लेंगे। सर मैंने जवाब तो दिया था उसका, आपने तो आप कह देते हैं ना ना हाँ बस। सर मैंने तो लॉ से साइन किया हुआ है, हम आपको आर्टिकुलेट कर रहे हैं बेहतर चीजें। मैंने तो जवाब दिया हुआ है जनाब को, अगर फिर अगर नहीं है तो फिर वक्त जाहिर ना करें, किसी और को मौका दे देना। मैंने तो सर जवाब दिया हुआ है कि वो नहीं छोड़िए ना, फिर आप रोस्टर में अगर आपको कोई वही बातें अगर हमसे एग्री या डिसएग्री करेंगे और बता देता हूँ सर, जल्दी कर लें प्लीज। सर दिस लॉ affects. Oh, brevity is the soul of wit. Absolutely. Thank you for agreeing. For a change, I believe. Sir, the Constitution has created a balance between the three pillars. Please, अब ये बात कितनी दफा कर चुके हैं, trichotomy of powers की। Sir, नहीं, if that's a different point. After 18th constitutional amendment, the Chief Justice, जो पुराना concept था, Chief Justice is first among the equals, has gone away, because the Constitution has now given a provision in the Constitution where the Honorable Chief Justice has a supremacy or a primacy, at least to the extent of the administrative functions, because the Constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the Chief Justice. And there are other functions in the Constitution which are ascribed or prescribed for the Honorable Chief Justice. You're just waffling. You're not articulating any contention. This is what. So what I am saying. I mean, it's obvious. It's written there. What's so profound here? उसके Constitution के consequences है ना. Mr. Hassan, we will not permit this. हर चीज का एक सर meaning है ना. अगर आप उसको देखें तो वो बात आ जाएगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को आप इस तरीके से थ्रू अ सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन नहीं कर सकते है ना, कोई मजीद बात कर लें ना, मजीद कोई पॉइंट कर लें, वही आप बात 6 दफा करेंगे। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस जो मैंने केस लॉ इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो एक इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, मैंने केस लॉ आपको दे दिया है। एंड माय लास्ट पॉइंट जो अपील के अंदर मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया था कि अपील 185 के अंदर, देखिए उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं की, और मंसूर साहब ने ये बात की थी। इस कानून में 2 चीज़ें हैं, नाम तो इसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मगर एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है, राइट ऑफ अपील। वो ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। इसका नाम शायद हो सकता था ज़रा कुछ और, मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर रही है, एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है।
उधर उस पे आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं? जी जी सर, उसमें फिर 185 पढ़ लीजिए। हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी राय दीजिए मैं ना। अपनी राय नहीं हसन साहब, उसमें उसके लिए अगर आप एंट्री 58 एक सेकंड पढ़ेंगे। जी सर, एंट्री 58 सर, उसमें एक सवाल है आपसे, अगर आप जवाब दें। एंट्री 58 जरा पढ़िएगा तो फिर सवाल। Matters which under the constitution are within the legislative competence of Majlis Shura or relate to the federation. 55 sorry. 55 जी, 55 है jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. आप इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या मानी है इसके? Enlargement है या ये सब वो है, retraction है? और खास तौर पे जो to the extent by the constitution under the constitution, इनके क्या माने हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। आप देख, सवाल तो ये है ना कि इसमें ये देखिए मासून हसन, सवाल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से हो सकती है जिस तरह ये की गई है, और उसके जो यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी कि वो किन सर्कमस्टांसेस में हुई है, वो रिपोर्ट आई है अभी तक? वो रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक। सर दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मेरा इसमें मैंने तो आर्ग्यू किया है, वो आप कहें मैंने नहीं आर्ग्यू किया। मानी बताइए, एंट्री 55 के जरा मानी बताते हैं। हाउ यू अंडरस्टैंड एंट्री 55? Sir, this relates to jurisdiction and powers of all the courts except the Supreme Court with respect to any matters in this list and to such extent as is expressly authorized. So it has to be expressly authorized by or under the Constitution. क्या माने? इसका मतलब है कि Constitution उसको authorize specially करेगा तो वो चीज आएगी। तो by हो गया ना, under the Constitution का क्या मतलब? Sir, which is by or under means Are you saying there are interchangeable words and under doesn't add anything? Is that what you're saying? No, sir. They can take this question with a level of seriousness. Don't just sort of flip-flop the question like that. It's a very important case. You give it the, you just agreeing, disagreeing. My Lord has asked a very specific question, and under what does it add? Say nothing, say something, what does it add? Sir, by or under the Constitution means that anything which is either provided by the Constitution or under the Constitution, which would your Lordship would deduce through an interpretation. Are they interchangeable terms? Included in that. Because by the It- Constitution means that it has to be included in the Constitution. Whether it is expressly provided in the Constitution or by implication provided by the Constitution, but there is a question here. No. You see, enlargement, the but word. but it आप relates जवाब to तो देना पहले सवाल। सर उसका देखिए आपसे पूछा है ना, by और under क्या under by the parliament है, by the act of the parliament है, under sir, the constitution, it under doesn't the read that. constitution से क्या मानी, कोई reference देना। under the Constitution which is provided, and in the Constitution would include everything and anything which is in there. Mr. Hassan, would you're be not, a power to make Hassan legislation. साहब, you're not adding anything Sir, useful. मैं बस conclude फिर आप इसको Sir, conclude ही एक कर चीज रहे हैं। सिर्फ बता दें, enlargement of jurisdiction. One, enlargement, the word enlargement in itself implies that something already exists and it is being enlarged. Now, providing a fresh appeal is conferring a jurisdiction or enlarging a jurisdiction? It's conferring the jurisdiction. It is not enlargement. It is not. Why? Because it does not exist previously. So anything which maybe enlargement would be which is already existing and your lordships are given additional powers to do that, or Can you cite an example? Cite an example. Learned Council, ये appeal जो है, ये appeal किस jurisdiction और power की remedy है? Sorry? किस power और jurisdiction की remedy है? The appeal 184(3) की है. That power already exists. Sir, and it's only a continuation of the same power. Sir, 185 के अंदर 184 की appeal does not exist with utmost respect. Learned Council जो my lord ने सवाल पूछा वो है, सवाल के ऊपर again देखिए question ये है कि if your lordships are to read into the constitution, then that's a different question. The question is 184 is before 185. ठीक है? सारी जो appeals
सुप्रीम कोर्ट के में प्रोवाइडेड हैं वो हर उसकी तमाम सूरतें 185 में मेंशन की गई. If the framers of the Constitution wished to provide an appeal under 184, they could have easily added something in 185 saying 185 के अंडर 184 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है. आर्टिकल आइटम 55 में enlargement के यूज वर्ड इस्तेमाल करके ये कहना कि जी हम एक नई jurisdiction क्रिएट या कन्फर कर सकते हैं, is that doable? और उसी में मैं ऐड कर दूं कि कंपटीशन कमीशन एक्ट में अगर अपील है और काफी कवानीन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील आ गई है, तो फिर वो तो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई जुरिसडिक्शन लार्ज सर वो कैसे फिर अपील आ गई? we are trying to mix the two things. That is by virtue of another entry in the constitution, the legislation relating to that has got nothing to do with 184 power. जी मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, एंट्री 55 में स्पेसिफिकली इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन डील करती है, तो वी विल नॉट गो टू एनी जनरल एंट्री, वी विल गो टू द स्पेसिफिक एंट्री फर्स्ट, which says that enlargement of jurisdiction can be either expressly given in the constitution और अंडर तो का मतलब ही नहीं अभी तक आपसे आया, लेकिन चले बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली, तो फिर कंपटीशन कमीशन की अपील कैसे आ गई? सर उसमें जो अपील जी सर 185 को जब आप पढ़ेंगे 185 के अंदर अपील कंपटीशन कमीशन के लिए हसन साहब यू नॉट रियली आंसरिंग एनीथिंग. नो यू आर नॉट आंसरिंग, सॉरी टू से. तो आप किसी और को दे देना, अब काफी हो गया ना, अब देख लें 1 बज रहा है, अब आप कितना आपने आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा कहा था, मैंने आपको 2 घंटे दे दिए. सर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको. आप एग्जाम्पल की बात हो रही है, देखिए मैं लास्ट डेट पे भी मैंने क्वेश्चन किया, उसका जवाब नहीं आया. आपके लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो 199 है, उसके लिए एक अपील प्रोवाइड की गई है. उस अपील को बाद में 269 आर्टिकल 269 में उस जो आपके ऑर्डिनेंस था, मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया कि ये जो ऑर्डिनेंस के तहत एक अपील की रेमेडी दी गई है वो दुरुस्त दी गई है. वो भी कॉन्स्टिट्यूशन वो कि वो हाई कोर्ट से मुतालिक है, नो डाउट, लेकिन हाई कोर्ट को भी 202 कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को 191 कर रहे हैं, दोनों सेम लैंग्वेज है. अगर 199 में अपील की रेमेडी आज तक चली आ रही है, क्यों ना 184(3) में आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए? वहाँ होनी चाहिए बेशक हाई कोर्ट से. फिर वो सिविल प्रोसीजर कोड की अमेंडमेंट के थ्रू अपील है, दैट इज अ डिफरेंट कॉनोटेशन. हियर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट्स अ डिफरेंट कॉनोटेशन. वो तो हम उसको दो चीजों को इंटरलिंक नहीं कर सकते. और आइटम 55 में हाई कोर्ट के मुतालिक लेजिस्लेशन पे कदगन नहीं है, कोई भी नहीं है. Yes, Mr. Bandari, I think you want to now take the rostrum. I have a question. ये जो आपसे enlargement of jurisdiction पूछा था, I go back to the question कि जो constitution of benches है, वो कौन सी jurisdiction है under the constitution जिसको enlarge किया जा रहा है? कोई भी नहीं है. वो तो आपने constitution of benches तो rules में बनाई है, constitution में तो कोई provision नहीं है. That is the whole. That's not an enlargement of jurisdiction, or is it a jurisdiction? That is all. In fact, that is a jurisdiction. That's not an enlargement of jurisdiction. Constitution of benches are by way of the rule-making part that the court has decided that benches is formed. So that's not an exercise of jurisdiction. England के अंदर they have actually formed a special law for that. कि ऐसी ज़बानी बात ना करें, लॉ का हवाला दीजिए. सर इंग्लैंड में ऐसे लॉ हो गया, ऐसे नहीं करें ना, दें चीजें हमें फिर. मिस्टर हसन, इस लॉ में दो चीजें हो रही है ना, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, एक अपील की जुरिसडिक्शन की बात है, तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसको सेपरेट रखें. बिल्कुल सेपरेट करें. खान बंदारी साहब शायद बेहतर जवाब दें, शायद या सुनते हैं इनको. जी सर, बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच फॉर. थैंक यू. You are a petitioner? My lord, I am representing PTI. Your lordship said. Are you a petition number? My lord, notice was issued in all petitions. Have you filed something? My lord, I filed two concise statements, CMA 3933 3933 and CMA number 8351. 8351. What are the difference between the two? My lord, the first was filed several months ago. The 8351 was filed yesterday in the light of the observations that have been made
on the last date of hearing the submissions made by council, I've tried to address some of the points that have come up during your lordship's observations. First of all, tell me where you stand. My lord, I am under instructions to support the petitioners, but with some caveats. I am not saying, and I'll just say this and then move on to my submissions. Well, I am not saying that the Parliament cannot per se make any law as far as the practice and procedure of the Supreme Court is concerned. It can, but that power is heavily circumscribed by various express and structural limitations within the Constitution. So that's heavily circumscribed. But within those limits, it can, and I'll expand on that. So, as my Lord Justice Mansoor just said, there are two aspects to the. First, finish your thing. My Lord. Then you come to what we have observed. My Lord, yes. You said you are conceding that the Parliament can, but their powers heavily circumscribed. Heavily circumscribed. Now, which particular provisions of this Act are you think the Parliament has exceeded its jurisdiction? If I may, if you could first expound on your initial proposition. Sorry, as far as the first point, if you could expound on that particular part, that the legislature has the power. Please explain that. Then move on to the issue where the restrictions are. My Lord, absolutely. That's exactly how I will address. And I will address both aspects of the law on this point. First aspect is the practice and procedure aspect, sections 2, 3, 4, 6, 7. And then there is the appeal, and I'll address them separately. I'll start with the practice and procedure bit first. My Lord, the various articles have been read out before the court many times. My Lord, Article 1, let's start off with where the Parliament draws its legislative power from. There are two sources in the Constitution. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। वकला की जानिब से दलाइल जारी। कोशिश है कि केस को सुनकर आज ही फैसला कर लें। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 46,727 पर पहुंच गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 285 रुपए 65 पैसे पर पहुंच गया। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियां भी भरपूर अंदाज में जारी। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में अहम इजलास। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से गौर। वालिदैन की बच्चों की तालीम में बड़ी मेहनत शामिल है।